kind of a session is, if parents have an idea that this kind of a session is going to happen, they would be interested in talking to these guys. But trust me, I know what I'm doing. So abhi, this is not the right stage. At the end of the session, there might be a surprise. We'll see. I'm trying to put up a surprise, but I cannot commit. So why this session? This is the first time in the history of Genesis we are doing it. And why we are doing it is because somewhere down the line we were feeling that जो connect आप अपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल probably इस एज ग्रुप के लोगों से करते हो, that probably does not happen. That kind of impact will never happen with what do we say, with the teachers and the mentors, because age का भी फर्क आ जाता है, expectation का भी फर्क आ जाता है, challenges का भी फर्क आ जाता है, and all that stuff. So we would need a full throttle participation today. I would lock the meeting room in a while, because I know बच्चे क्लास में भी लेट आते हैं, तो यहाँ पे भी लेट आते हैं, ठीक है. So in a while I'll lock down the meeting. I would request, last time my team is also in the meeting. Before I pass them the instruction to put you on a waiting room, it's my humble request to ensure that your camera is switched on, or if you accept one kid who has requested to not able to switch on the camera with a genuine reason, we have no names who can afford to switch off their cameras. Okay, if you cannot follow guidelines, bache, you get the recording, you आप recording देख के खुश होके तालियां मार लेना, ठीक है. Now before I introduce the kids who have done it, the kids who are presently in +1 and +2, it's very important that this session is for you. I requested these kids to take out time from their so-called busy schedules. ऐसा कुछ नहीं, आजकल वो वेले ही हैं, because अभी admissions की counseling चल रही है, but फिर भी Saturday evening को time निकालना for this initiative is commendable. So it is about you and them. You have to make it count. You can ask doubts on the chat, though I have planned this session in a different way. Okay, I have noted down, I have got all the concerns. I know the feedbacks and the concerns you have. So I'll try to put it across to each one of them one by one. जो मुझे लगता है किस बच्चे के लिए कौन से relevant answer से आपको क्या मिलेगी, वो क्या कहते हैं, आपको validation मिलेगी. But we'll try to have this as honest, as no filtered session, and the kids who have done it, who have cracked all these entrances and done in well in board examination, it's my request to all of you that be as honest as you can, and be as clear as you can. Guys, are we all set? I'm very excited to host this one. This is a very different and a unique concept. So अब ऐसा करेंगे, अब कैसे करेंगे कि मुझे एक बार I'm quickly giving all of you, सबकी screens on होनी चाहिए, sorry, videos on होनी चाहिए, because then now we'll start putting kids in the waiting room, बेटा, and you know the reasons है ना, because अभी कोई आके मुझे गालियां देने लग जाए, तुम्हें गालियां देने लगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे तो चल जाएगा, तुम्हें कोई गालियां दे वो मुझे वो नहीं है. This is an open meeting. I'll also enable the waiting room now, so अगर कोई आता रहेगा देख लेंगे. So I'm not able to see few of you, like Kabir Khanna's idea I cannot see. So you Avinav, I don't know who's Avinav. Bache, aap you have just joined Genesis, I think, beta, in Zirakpur branch. So I think you got to switch on your video, beta. Adarsh, I am not able to see you. Arshia, connect. Arshia has taken the permission. Gauri, Aman, Adarsh, Archit Chaudhary, and Kaneka. Guys, you have to switch on your videos, else my team will put you in the waiting room. It's a final call for all of you. That's pretty awesome. So now I'll enable the waiting room. हम सबको अपने आप को म्यूट पे रखेंगे. मैं जिसका नाम कॉल करूंगा, he or she will come into the picture. Guys, are the instructions clear? आप कुछ भी बात कर सकते हैं. This is not going to be shared with, मतलब अगर आप प्यार मोहब्बत की बात भी करोगे, it's absolutely okay, because मैं तो definitely करने वाला हूँ. ठीक है, don't worry. ठीक है. So we'll clear the myths. And I'm your friend basically in this session. Moderator ka role is that I'll try to speak less, but my only role would be to enable the smooth conversation. और मुझे कम बोलने का मन है आज, वो तभी, because I had a long 8-hour session जो मेरा खुद का था. I was doing some course today, जो भी just I got finished at 6 o'clock in the evening from morning 10. ठीक है. So वो तब possible है अगर आप लोग participate करोगे पूरी दिल से. ठीक है. So
Are the instructions clear? Are the instructions clear to all of you? The thumbs up will be awesome. A thumbs up will be awesome. So let me put first kid, jiski story, we all know the story. So it is going to be an interesting one. Mananpreet, get ready, beta. So I'll put the frame. I'll share the screen with Mananpreet. So give me a minute, guys. Thoda beech mein interruptions aayenge because I have to give them the spotlight along with me. So I hope now on the screen is both Mananpreet and me. You can see us. Mananpreet, let me give you the permission to unmute yourself now. Now you can unmute yourself. सिर्फ मननप्रीत के अलावा कोई unmute नहीं करेगा. So guys, we all are good to go. हम दोनों सही दिख रहे हैं आपको? Okay. So Mananpreet, can you hear me, बच्चा? Yes, sir. Great, Mananpreet. So all of them know your story. They know that how did you manage it and all that stuff. She scored 99 point. I'm so sorry, मैं भूल जाता हूँ. 99 point. I'm so sorry. 99.5 percentile, which means that she is among the top 0.5% students in the entire nation in JEE. She was, I'm sorry, but with the truth being told, I've taught so many kids over these years, but someone average kid creating such a magic has never happened in the history of Genesis. With that kind of a magic, like 99.5. Her batchmates was surprised. We were surprised. She cried. Jis din result aaya, she did not sleep the entire night. And so Mananpreet, how did you transform it? How was the journey? Hua kaise ye? Matlab, how did the magic actually happen, beta? सर स्टार्टिंग में 11th तो पूरी ऑनलाइन गई, तो वो तो पार्टी मतलब उड़ा हुआ था सारा. 12th में आके जब ऑफलाइन हुआ तो चीजें बेटर समझ आने लगी और ऐसा लगा कि हाँ हो जाएगा. 11th तक तो ऐसा था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा. सारे टीचर्स भी बोलते थे कि तुमसे हो जाएगा, तुम 99 कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, पर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था. 12th ऑफलाइन गई तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर आ गया. एंड में आके तो मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह ही दिए हैं सारे और अपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करा, स्पेशली केमिस्ट्री जैसे आपने बोला था. तो उसकी वजह से आई गेस मतलब मेरा और पेपर में भी टेम्परमेंट ठीक रहा, तो आई गेस उसकी वजह से मेरा मतलब जितना स्कोर आना था उससे डबल ही हो गया. लाइक जो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैंने सोचा था कि मतलब कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चंस तो कर ही लूंगी, मतलब इतना टारगेट लेके चलती हूँ तभी होंगे कुछ, मतलब स्कोर तभी 200 बनता है. तो So I want to टारगेट understand, Mananpreet, I want to understand कि आपका जेनेसिस के एक सिंपल से रूम में आपने अपना एक अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम देयर वाज अ रूम जहां पे आप रोज 5-5 6-6 घंटे बैठ के पढ़ते थे, घर नहीं जाते थे. What was that love with the classroom and how did you manage that kind of a boring classroom माहौल जहाँ पे डिस्टर्बेंस भी होती थी but you still manage, जो 6-5 बजे तक रोज पढ़ती थी. ये रियलाइजेशन कब हुई कि मुझे रोज 5-5 6-6 घंटे यहीं पढ़ के जाना है, घर जाने से उतनी पढ़ाई नहीं हो रही है, या what was the thought process behind that? फिर मतलब एक टाइम पे आके ऐसा लगता था कि अभी सिटिंग बनानी और जरूरी है. तो घर पे जब जाती थी, घर पे जाओ पढ़ो, लाइक स्टडी टेबल पे बैठो, डिस्ट्रैक्शन फिर हो जाती थी कि फोन है, आईपैड है, कुछ देख लो, पेरेंट्स के साथ कभी बात कर लो. मतलब बीच बीच में जैसे सिटिंग होती है ना 40-50 ऐसे 1 घंटे की 2 घंटे की, वो बन ही नहीं पाती थी. बीच में 10 मिनट उठ गई, 15 मिनट उठ गई, तो वो ब्रेक हो जाता था. फिर मैंने जैसे स्टार्टिंग में 10th में आती थी तो मुझे लगता था कि हाँ यहाँ पे पढ़ा जाता है. मुझे उस टाइम से याद था कि यहाँ पे पढ़ा जाता है, जब मैं बोर्ड्स के टाइम 10th में पढ़ती थी. आई रिमेम्बर क्लास से पहले आई थी 10th में. हाँ क्लास शाम को होती थी बट तू स्कूल के बाद थोड़ी जल्दी आ जाती थी, है ना? हाँ. सो तो वहां पे कंटिन्यू. वहां पे आके ऐसा लगा था कि मतलब यहाँ सेटिंग बन जाती है. फिर मैंने धीरे धीरे बनानी शुरू करी. स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी क्योंकि फिर 5-6 घंटे ऐसे कंटिन्यूसली बैठना, बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है वैसे भी. पहले 9 to 2 क्लासेस लगाना, फिर इतनी देर और बैठना, वो एग्जॉस्टिंग. स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते प्रॉब्लम्स आती है, फिर धीरे धीरे अपना आप ही शेड्यूल बन जाता है कि हाँ कि पता है कि इतनी सिटिंग बनानी है तो बनानी है. Okay, guys, you can send a question in the chat if you have any question for Mananpreet.
have to make it quick, else this session will not get over till 12 o'clock. And this is Saturday night. Okay, so abhi koi question nahi hai. Okay, you can send on the chat if you want to, bache. Else we'll keep on adding more. So okay, so I hope so the journey is very simple. You put a lot of effort. So how many hours did you put in effort? So we have a question: how did you manage time for each subject? So one question is for you, Manpreet. How did you manage time for each subject? स्टार्टिंग में तो मतलब इक्वल टाइम देती थी, लाइक एंड में आके जैसे सर ने हमें गाइड करा था कि तुम पहले ज्यादा केमिस्ट्री को टाइम दो, तो मतलब जितने भी आवर्स पढ़ती थी, ऐसे दिन का फिक्स नहीं था कि 8 पढ़ना है 10 पढ़ना है, जितना भी पढ़ा जाता था आधा टाइम केमिस्ट्री को देती थी। फिर मतलब फिर मैं मैथ्स और फिजिक्स को देती थी, मतलब मैथ्स को ज्यादा देती थी क्योंकि मुझे फिजिक्स से ऑनेस्टली डर लगता था कि पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। फिजिक्स से मुझे स्टार्टिंग से बहुत डर लगा है, तो मैं फिजिक्स को उतना टाइम वैसे भी नहीं दे पाती थी। मुझे लगता था कि एंड में आके कि मैं मैथ्स स्क्रू ना कर दूं फिर अपने फिजिक्स के चक्कर में, कि फिजिक्स भी ना हो और मैथ्स भी ना हो। परफेक्ट। सो एनीवन वांट्स टू आस्क, कुछ किसी और ने कुछ पूछना? Okay, so I'll add the next candidate is Manya Gupta 2. So her is a very interesting case. Manpreet, I'm removing the spotlight from you. So I think अगर एक story of comeback की बात करें, so her is a story of one of the craziest comeback I think in the country, and I'm not denying, and I'm not kidding. Trust me, she scored how much percentile in JE1, Manya? 75. Okay, and in JE2 she has managed 99.62. So 65. I'm so sorry यार, मेरे को पता नहीं 62 क्यों याद रहा है. I'm so sorry. So 99.65 is a percentile, which means, and officially I was checking, she is in top 5 or top 7 in the entire region, this part of the region. And this is craziest thing I have ever seen. She was a talent. We had no doubt about her talent, and she's one hell of a girl who gets distracted like this. So I've been blessed to mentor her from last 4 years, guys. So हाँ, 4 साल से we she's a part of 4 साल ना, अब तो ठीक बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yeah. So Manya, how did the turnaround actually happen? I think this is going to be an interesting story. How did the actual turnaround happen that from 75 and in the next 30 days you are among the best in the country? So पहले तो जब रिजल्ट आया, I was completely shattered कि 75, I won't get anything. So then I analyzed कि what went wrong. I focused on कितने questions attempt करूँ मैं ताकि I get to that score. इस चीज में मैंने अपनी accuracy बहुत down कर दी. So I started putting guesses in that paper in first one. Then second I was like कि let's not focus about the questions, accuracy पे ज़्यादा ध्यान, तो उसके कारण it got better and better. So but it got better and better. What was the मतलब कितना pressure था तेरे ऊपर between main 1 and main 2, because everybody was expecting much better than somewhere around 96, 97, 90 at least from you. You did well in mock tests also, but how did you handle that kind of a tremendous pressure? And above all, your friends did very well in 1 and you used to be at per their level. वो एकदम से गिरने के बाद how did you handle that pressure and all that stuff? So that phase was very difficult. बहुत peer pressure, Genesis से parents, rather parents were kind of supportive in that matter. They were supportive कि it's okay, you have another chance, give it a shot. So I was just ignoring all of that, focusing on myself कि I have to do that. मतलब just अगले next 40 years will depend on this. So I have to make it happen. Next 40 years will depend upon it. That's awesome. And you have been someone who I know is very prone to distractions, and there were moments in last 4 years where we had moments of immense distraction, and I think the kids who are listening to you, 70% of them fall into that kind of a category. So in spite of that, you scored brilliant in class 10 boards. My percentage मुझे भूल गया, but I think it was close to 95 ICSE board, I remember.
and 12th you have done. You know what we all do, we all know. So how did you manage the distractions along with this, and what is your advice to these young guys gearing up for JEE NEET or board examination next year or 2 years? For distractions, I won't give credit to myself. I'll give it to Sahil sir, because it was genuinely, I was not in control of my distractions. So, but I would suggest you that just keep your, I understand distractions hain, but keep that study phase up. I never let that study phase get to me कि मैं down चली गई उस distraction के कारण. To just keep that in balance, and अभी के लिए just 2 साल हैं, so just avoid it if you can. Okay, so what were your study hours in 11th and 12th? What kind of study hours you had? And I think I like to add, guys, I like to add one more thing here. She's giving me the credit of handling the distraction, but the only point was that you all need to understand it. मैं उसी बच्चे की हेल्प कर सकता हूं जिसका मुझे ये पता लगे with complete honesty that he or she is getting distracted, or he or she is in a mess where she's not able to focus or he's not able to focus. अगर मुझे वो चीज पता नहीं लगेगी, and I think मतलब with Manya I had a relationship which was absolutely transparent. क्या वो लड़कों की बात करना, क्या वो मतलब if she dated someone XYZ, so I knew all the chaps and all that stuff. Okay, so the first thing was like I could only help her because she wanted help and she was very open with it. She has never been expressive in terms of one-to-one, but she was very expressive on the chat. She used to come bluntly and ask on Instagram message, or I think Instagram was the one she contacted me the most. Long messages. ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूं, and all that stuff and I was very strict with her. I was very rude to her on many occasions. Trust me, and I'm not kidding. Very rude. मतलब there are very rare girls जिनके पास as girls I've been so rude. She was one of them where I was very blunt, and I was very blunt. मतलब I remember the last PTM or second last PTM in 12th we had, and I told her parents कि मतलब I was very rude. I was very rude. So I think I will introduce her later again. Any questions to her, guys? Young champions, this is for you. You can ask a question. Okay, we have some questions. Okay, this is, yeah. Apart from distractions like phone and relationship, there are distractions while like studying, like dhyan idhar udhar ho gaya. So how did she manage that? So how did you manage distractions which were apart from opposite gender attractions or mobile? How did you handle कि पढ़ते पढ़ते अगर concentration lapse हो गया तो कैसे किया? ये बहुत frequently हुआ मेरे साथ. So I switched to Genesis. That again same cabin. I used to sit 3-4 hours, 5 hours, जितना भी हो सके. I used to sit there, and मैंने एक schedule बना लिया था. I'll do the concepts there and the questions घर पे, because it's easier like that. तो वो चीज sitting से and efficiency से आ जाएगी. And also जिसने भी ये question पूछा, I would like to add one more thing here. You got to stay in the present when you are studying. It's absolutely okay. One, it is absolutely okay कि mind जाएगा, because we are humans. We are not Alexa or Siri की command दी तो वही गाना पूरा करके ही रुकेगी कि हो गया गाना पूरा, अगला भौंक, नहीं तो तब तक नहीं बोलूंगी. We are not like that. We are not programmed. We are humans. We have emotions. So when we have emotions, we have both kind of emotions, positive and negative. So we are bound to get, सबका attention span different है. किसी का 5 मिनट, किसी का 10. आपकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ. 5, 10, 15, 20, आधा घंटा. ठीक है. So when you move away, the only thing is keep on talking to yourself. Probably when you have a study zone, आपने decide किया है कि आपने 1 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है. अपने को हर 15-20 मिनट बाद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि 1, मैं इस टाइम पर क्या सोच रहा हूं, and 2, can that wait? So if that can wait, and trust me, 99% of things we are thinking in the present situation. अभी for example कोई किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, maybe कोई सोच रहा है आज मैंने डिनर करने कहाँ जाना है, या आज मुझे जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है, सैटरडे है, पेरेंट्स ने अलाउ किया हुआ है. Now that can wait. Right now what is important is to stay in this zone.
understand from the other journey. So similarly, when you're studying, what is because sab padhna chahte hain. You see, we were supposed to have around 150 kids today, for example, 130, 140. How many have turned up? Approximately 54, जिसमें 8-10 ये लोग निकाल दो. So one third of you have only turned up, which gets it's an optional session. It was not a physics vector C class. It was not a mathematics or biology class. So it's an optional session since you have turned up, which clearly indicates you want to improve. Now, which means if you want to improve, you want to study. If you want to study, the only thing you got to, which is stopping you from study, is procrastination, and you get diverted during studies. So to put brakes during the study hours, put brakes where you ask yourself, don't get too much into the future result ka kya hoga and all that stuff. Wahi ruko, wahi pucho, is it important? If the thought is important, okay, then entertain it and then move to the studies. If the thought is not important, move to the studies and entertain that thought at the later stage. Make sense? So now we have a lot of chats. Now chat pe bahut sari baatein ho rahi hai. Okay, let me how to avoid overthinking while studying. I think Archit, I've answered that, bacha, that you got to set up 30 minutes alarm if you can. 30-minute alarm will be great to test ki 30 minute padha, uske baad where is your brain going, stay in the present and all that stuff. Sometimes a person faces major problems in any topic or subject. So did you ever feel like giving up back then? This can be answered by anyone, any champion. I think kuch bahut kam bacche turn up kar paye hain, but anyone can answer. Mani, you want to answer that? Did you ever feel like ki kisi subject ko give up karna hai? Or Mananpreet, can you answer that, or anyone else can answer that? You want to answer, Manya? Yes, sir. Who's answering? Yeah, Divya. Okay, let me also introduce now the Divyansh. कहाँ चला गया यार तू? हाथ खड़ा करना वापस साले. अरे सर कर रहा हूँ. आ गया. Give me a minute, bro. एक मिनट आइयो यार. देखो मेरे को तेरी शक्ल क्यों नहीं दिख रही? रुक जा. हाँ. So I'll quickly add Divyansh to this conversation. He's an interesting story. So this guy has a very interesting story. So what should I say? Again, he joined Genesis in class 10th, है ना, Divyansh? 10th. So 10th, I'll say an average boy. Trust me, है ना? I'll not be kidding. So average kid, cracking JEE with a 94 to 95 percentile, even cracked NDA also. Was focused more towards NDA in his journey. Was among the most distracted students in his batch, most distracted, but still somehow managed. Everybody was pleasantly surprised, shocked. How did he manage it? So I think he can answer it. Divyansh, over to you. Yes sir. सर बीच में जब मैं पढ़ता था तो सर मेरे से मैथ्स बिल्कुल नहीं होती थी. पहले तो मैथ्स करनी बंद कर दी मैंने. और सुंदर सर बहुत गुस्सा रहते थे हमेशा. होमवर्क में करता नहीं था. तो सर ये हुआ कि एंड आते आते मेरे को समझ आ गई कि मैथ्स तो जरूरी है. मतलब 5-7 क्वेश्चन तो निकालने जरूरी है मैथ्स के. मतलब परसेंटाइल बूस्ट मैथ्स ही करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है. उसके 16 to 18 क्वेश्चन हमें करने सही. और मैथ्स पे मैंने इतना फोकस किया कि मेरे 8 क्वेश्चन निकल जाए, और वो भी सही, मतलब बिना नेगेटिव मार्किंग के. तो सर इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक्स को चूज किया, मतलब जो आते थे, जैसे 11 से मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, 12 से वेक्टर्स वगैरह, इन सब पे फोकस करके 8 मैनेज करा 7-8 क्वेश्चंस में. सो जब गिव अप मारा तो कितनी देर के लिए बिल्कुल उस सब्जेक्ट से ब्रेक लिया, एंड डू यू थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन? सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस किया, मतलब 2-3 महीने छोड़ दिया मैंने. मतलब पढ़ता था, रिवाइज करता था, पर इतना नहीं करता था. जो सही था कि गलत था? सर पता नहीं, पर मोटिवेशन तो आई थी कि 8 क्वेश्चन तो करने हैं इसके, मतलब पेपर में कि परसेंटाइल बूस्ट तो होएगी इससे. So what is your advice to kids who are among the kids who are distracted? I repeat, तेरे आसपास भी बहुत सारे बच्चे थे, तेरे खास दोस्त, बहुत खास दोस्त, बहुत प्यारी लड़कियां जो बहुत प्यार करती थी तेरे को, बहुत प्यार देती थी. In spite of all that stuff, you managed. So what is your advice to these young kids who are among the kids who are distracted? सर मैंने लास्ट में सर किसी से बात करनी, मतलब आपको पता है मैंने इंटरेक्शन छोड़ दी सर किसी से भी. और सर मैं घर आके तो पढ़ता ही नहीं था, मतलब कि मैं वहीं पे बैठ के पढ़ता था. आपको भी पता होगा, मैं सेल्फ स्टडी जेनेसिस ही करता था. और 7:30-8 घर जाता. यस सर, 7:30-8 घर जाता था, क्योंकि वहाँ सर एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए. और सर डाउट्स भी वहाँ पे टीचर्स होते थे, तो डाउट्स भी क्लियर होते थे वहीं पे.
बोर्ड्स के टाइम भी ऐसे कर रहा है। Awesome. So I think okay, how to I'll keep on asking I'll keep on reading the chat. I think guys don't send the questions on the my direct message, send on the chat group ना, सब ये लोग भी पढ़ लेंगे, मेरे को पढ़ना पड़ रहा है. In case we get logged out, we join in again. Make sense guys? In case we log out, we join again. How do you so let me read. How did she better her temperament? This question is for you, Manya. How did you better your temperament after that fall? As it is really so. Rashi is a topper, Manya, one of the topper of Genesis. We expect her definitely cracking advanced. So her question is this: how did you manage the temperament after the first fall? Then I'll introduce Manya one also. Manya, do we have Pratibha? No, sir. Okay, no issues. Yeah. So this is so please answer, Manya. Two. It's really difficult after that fall, but आपको when you know you have the time span of 30 days, you have to keep yourself focused, accept all the pressure and everything, because you know either it's this or you will regret it your whole life. It was a do or die situation for me. So I had to ignore everything and just keep my focus on it. Okay, so this is an interesting question for all of you. How did you manage to? So let me introduce Manya one now also. So Manya, okay, I'll share an interesting story. Manya one, Manya two, and there's another girl, Pratibha, who could not join. They were the best. They are the best of the friends from class 9th. I think they had, but the one competition. If you want to see a healthy jealousy in the class among the students, even for a normal class test, because I taught them 10th 11th physics, मैंने ही पढ़ाया इनको. It was these three girls. Amazing rivalry, but when वो rivalry सिर्फ class में रहती थी और test तक रहती थी. When they move out, they were the bestest of the friends, in thick and thin. So introducing Manya one to you guys, a brilliant IQ बच्चा, a very good human being, all set to join an IIT, cracked IIT JEE, obviously JEE main, with a percentile of 99.11. Yes, sir. 99.11. JEE advanced rank close to 7,000. She's all set to join a good IIT and so Manya, how did you handle the expectations of being the topper, one of the topper throughout? How did you manage it? The handling the expectations especially. Yes, sir. So being consistent is the key. Like ये सारे पूछ रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें पढ़ते हुए. बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह होती है, लेकिन अगर हम अपना टाइम गोल सेट करेंगे कि हमें 2-2 घंटे देना है पढ़ाई को, तो वो हम ऐसे मतलब कंपल्शन हो जाएगी. ऐसा नहीं करना. लाइक मैं अपना गोल सेट करती थी कि कैसे कैसे करना है. जैसे मैथ्स में होमवर्क मिल रहा है तो सर देख के ही देते हैं कि 2.5 आवर्स का मिनिमम जाए, तो अपना होमवर्क कंप्लीट करो. केमिस्ट्री के पूरा रिवाइज करो आके, एंड फिजिक्स वगैरह के प्रीवियस ईयर्स करो. दैट विल बी सफिशिएंट. अगर आप टाइम देख के बैठोगे कि इतनी देर बैठना ही बैठना है, लेकिन अगर आप उसमें आप कंसंट्रेशन से नहीं बैठोगे, उसका कोई फायदा नहीं है. आप बैठे भी हो और एफिशिएंसी भी नहीं आई है. तो अपना गोल सेट करो एंड बस अपना गोल कंप्लीट करो मेरे अकॉर्डिंग. But goal complete करना, there were stages when you were not being able to consistent, है ना? कुछ ऐसा phases थे. How did you used to make a comeback? द्वारा देखो, just like there is a phase जब 2 दिन तू उतना नहीं पढ़ पाई, could be in your own zone, and she was one girl जो hardly distract हुई. मतलब ऐसा कुछ, it's not easy to distract this girl. She's a powerful soul. So how did you used to make a comeback to remotivate yourself to come back again and study after 2-3 दिन के distractions, not distraction, layoffs के बाद? तो मैं उसे छोड़ देती थी फॉर वीकेंड, क्योंकि इतना टाइम हमें मिलता ही है. हमारी क्लासेस 5 डेज अ वीक होती हैं, तो लाइक सैटरडे संडे होता है, उसको छोड़ दो. जो करंटली चल रहा है, जो होमवर्क दिया है उसके बाद कैचअप करो, और फिर वीकेंड पे उसको पूरा करो. लेकिन उसी वीकेंड पे अगर हम टालते जाएंगे तो नहीं होगा. जैसे फिजिक्स मेरे को नहीं पसंद थी बिल्कुल भी, मैं नहीं बैठती थी करने के लिए, बट फिर करना तो पड़ेगा ही एट द एंड जाके, क्योंकि परसेंटाइल तो आपको सब में ही चाहिए, तभी रैंक बूस्ट होगा. True.
तो वीकेंड Have कभी कभी नहीं मन करता पढ़ने का, तो वीकेंड पे उसको कवर अप कर लेना चाहिए, इनफ टाइम होता है। enough time is there. Absolutely right. Guys, you can send the question in chat. If how did you manage this cover? How did you better implement after that fall? Okay, how to reduce the number of breaks? Okay, I will answer that in a while. Has the thought of competition ever held you back? कभी ऐसा लगा कि competition बहुत ज्यादा है? We are talking about a national level entrance exam. If did it ever held you back or it inspired you to work hard? Anyone can answer that. यस सर, Mananpreet, you can बहुत answer that. ज्यादा लाइक मतलब हमारी क्लास में मान्या, प्रतिभा, मतलब बहुत सारे लाइक जब हम एक पेपर देते थे तो डर लगता था लिटरली कि इनके तो आते ही हैं। मैं तो मम्मी को भी यही बोलती थी कि मम्मा इनके आ जाते हैं, पता नहीं मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे। पर मेरी मम्मी सिर्फ यही बोलती थी खुद पे बिलीव रखो, मतलब ऐसे कंपटीशन हर जगह ही मिलेंगे लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि अब कंपटीशन के चक्कर में आप करना ही छोड़ दोगे। True. मतलब ये तो मुझे बहुत ज्यादा होता था कि क्लास में ही, मतलब नेशनल लेवल का तो छोड़ दो, मुझे तो क्लास में बहुत ज्यादा होता था। Yeah, so तो just for the बहुत fact पॉइंट check, लेके आता था। just for your fact check, guys, Manpreet studied in the batch where we had, I think, 13, 14 kids, and her performance in the batch was absolutely average. Am I right? मतलब ऐसा कभी नहीं था कि she was answering the most question. This is based upon the feedback I've got, all the mentors regularly, obviously. तो ऐसा कभी नहीं था she was a superstar performance during this, but eventually she turned it around. मतलब कहीं ना कहीं she handled the pressure when it mattered the most. और इवेंचुअली मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि हमारे पास एक सीट नहीं है आईआईटी, जेईई, नीट, जो व्हाटएवर इज योर टारगेट, बहुत सारी सीट्स हैं। बहुत लोग कहते हैं बहुत कंपटीशन है, वो सेकेंडरी है। आपको एक ही सीट चाहिए, उतनी अवेलेबल है, वी गॉट टू फाइट फॉर इट। हमें 2-4 सीट्स नहीं चाहिए कि हम लेट के पढ़ेंगे 2 साल आईआईटी में, 4 साल आईआईटी में लेट के पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में। वी जस्ट नीड 1 सीट, वी हैव इट गाइस, वी हैव टू रीजॉइन इट, वी आर रीजॉइनिंग इट नाउ। We'll try to cover it in next 10 to 15 minutes. We'll cover the session in case we have not got a lot of doubts. So continuing, so for all of you who are listening, this is important now, especially the kids who are abhi, the game is just continuing. It is very, very important, bacha, that the ones who have cracked it, ऐसा नहीं है, and you can talk to them, you can take, if you require, you can take phone numbers from me, I'll give it to you, you can talk to all of them. ऐसा कोई नहीं होगा, because I've mentored them personally, emotionally, that जिसको डर नहीं लगा होगा कंपटीशन से। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत डांटता था मान्या 1 को, बिकॉज वो हर बार रोती रहती थी, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू क्रिब about everything. Manya, aa gayi tu? Manya 1, are you there? Can you raise Yes, your sir. hand? Yeah, give me a minute, I'm adding you to the spot. Yeah, so we are back, guys, all of us are back. So Manya, did Manya 1, so आपको बहुत डर लगता था, आप हमेशा ना खुश रहते थे, बैच में आपको बच्चे चढ़ाते भी थे कि आप खुश नहीं रहते हो, मतलब खुश नहीं, आप हमेशा कंप्लेनिंग जोन में रहते हो। So did you had fear, डर लगता था एंट्रेंस एग्जाम से, प्रेशर से? were you afraid and how did you overcome it? यस सर, सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ही थी मुझसे कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट जैसे मैं कभी कभी इतने एफर्ट्स नहीं पुट कर पाती थी, तो खुद पे भी रिग्रेट होता था। तो उसी चीज का मतलब रहता था कि क्रिब करना कि खुद ही एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं Okay, so this is a very interesting, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। so there's an interesting question, anyone of you can answer, probably anyone of you can. This is a good kid, Adarsh Sharma, he's asking, how do you handle self doubts? Who wants to answer this? How to handle self doubt? I think Manpreet, you would be the best person to answer this, because you had a lot of doubts. सर मतलब एक पॉइंट पे आके ऐसा होता है कि होगा नहीं, एंड में मेरे को मतलब मुझे 12th की पूरा साल ही ऐसा लगा, 11th तो ऑनलाइन ही गई है, पर 12th का पूरा साल ही ऐसा लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पर एंड में आके मतलब स्पेशली इन द पेपर मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा। मतलब उस 3 घंटे पेपर देते हुए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं तब थी कि हो जाएगा करते हुए। मतलब लास्ट का महीना ठीक गया था, महीना मैं खुद पे फोकस कर रही थी, तब सही रहा सब कुछ। पर स्पेशली पेपर में सबसे ज्यादा था कि मैं सबसे ज्यादा खुद पे कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा। लग रहा था कि आई मतलब पूरा साल सही गया है,
पूरा साल तो ऐसे ही लगेगा कि कंपटीशन की वजह से मतलब इतना प्रेशर, मतलब टीचर्स के, पेरेंट्स के, सब जगह से प्रेशर कि करना है, मतलब आगे फ्यूचर डिपेंड करता है इस पे। तो इतना है कि अपने ऊपर स्टार्टिंग से बिलीव रखो कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ऐसा लगता था कि नहीं हो सकता। अगर शायद अच्छा, मैं रखती तो शायद मैं जेई एडवांस भी क्रैक कर पाती, yeah, लाइक yeah, अगर but थोड़ा स्टार्टिंग से you were रखती। never keen to crack JEE Advance, if I remember it, है ना? हाँ, हम यस। मेन से बहुत खुश हो गए, मेन से बहुत खुश। Okay. Did anyone of you faced anxiety? A question आया है. Did anyone of you had anxiety? किसी भी point पे journey पे कि यार क्या हो रहा है? Divyansh, did you ever had anxiety issues? Manya, I don't think so. Anxiety सर हुआ जब किस? जब पढ़ना स्टार्ट किया सर तब तो हुआ था। मतलब पढ़ना पहले सीरियस नहीं था सर, वो जब exactly. Now this is an important question because जब lot of सीरियस boys हुआ तो will फिर मुझे relate to काफी you. डाउट्स भी थे। Divyansh, वो कौन सा point था in your journey of, because 11th was a complete goner being an online. वो कौन सा point था यस journey सर। का during this 2 years when you actually decided to self study? सर एक्चुअली जब मेरे को बोर्ड से पहले देव सर ने समझाया कि भाई पढ़ना शुरू कर दे, तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। मतलब आई रियलाइज कि अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत पास आ गया सब कुछ। और फिर डर लगता था कि अगर नहीं हुआ तो रह जाऊंगा, क्योंकि हमारा बैच मिक्स था काफी। बहुत पढ़ने वाले भी थे, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले भी थे। हम्म तो सर जैसे काफी दोस्तों के अच्छे नंबर आते थे तो देख के लगता था कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा। और टीचर्स भी सर ऐसे बोलते थे कि मतलब उसके देख ले, मतलब नंबर आ रहे हैं तुम्हारे साथ वाले निकल जाएंगे, तुम रह जाओगे। तो सर वो डाउट था हमेशा। कभी रोना आया? Did और anyone फिर of you? सर सेल्फ डाउट की बात है तो सर जब हम करना स्टार्ट करते हैं। So my very open heart to heart question to you. Okay, now I told you there is a surprise. So I requested few of the champions 2021 also to join. So one of them could find time. He scored 99.7 percentile in NEET. He cracked NEET. मैंने स्पेशली उसको बोला because I wanted the NEET aspirants to meet him. Kunal, can you raise your hand, bro? Hello. Yeah, guys, give me a minute. Let me add Kunal to the. So hi guys, he's Kunal Rajput. He passed out from Genesis in 2021. थोड़ा सा brief बताता हूँ, interesting story. Now this guy never wanted to appear for NEET. He was a brilliant kid, very immensely focused, determined. कोई फर्क नहीं है, लॉकडाउन था because his. I'm so sorry, Manik is also joined. Manik is another champion 2021. Manik, raise your hand. He is studying in IIT मंडी. कहाँ चला गया? हाथ खड़ा कर साले. Manik, raise your hand. भूल गया Zoom यूज करना. In the meantime, let me continue with the story. So Kunal Rajput को कोई फर्क नहीं था. 11th was offline. His 11th was offline. इनका बेचारों को लॉकडाउन लगा when they guys went into 12th, and it was a bad lockdown. We all remember the first year of lockdown. This guy had no issues. उस time हम videos भेजते थे teachers. He was a damn focused guy. Crazy. NEET के लिए clear था, NEET नहीं करना, डॉक्टर नहीं बनना. He wanted to do research. I requested him कि bro at least paper दे दे. I'm sure you would nail it. He nailed it with 99.7 percentile. One of the bestest in the region. 99.7 in this NEET is a highest what we have produced from Genesis. So Kunal, he's presently doing. He did not pursue to be a doctor. He was very clear. अभी भी वो डॉक्टर नहीं बन रहा. He quit. मतलब नीट को उसने कुछ फायदा नहीं उठाया. But again, he has been a champion who is doing his research. Why I have introduced him and Manik and एक दो और को बोला था, they see they'll be able to join or not, because they would tell you the power of getting into the India's best college. Because अभी जो आप champions 2022 से जिनसे आप बात कर रहे थे, they have yet to experience the power of joining the India's best college. Manik, I'm adding you to the spotlight. Yeah, Manik is also added. So I'll give it to Kunal. Kunal, how did you manage NEET? One, how did you maintain your focus? And how is life in India's one of the best college? This is going to be inspirational for all of you now. And so good to see you after so long. Yeah, sir. So good to see you too. Yeah, go on.
Hello everyone. So see, I'm not a perfectionist. I don't know what to say when someone asks that how to crack NEET or like that. See, but I have some tips. Like I have thought of it. Like if I get a chance to go back and tell myself that hey, you can do this, it will help you. So these are some tips that I try to compile, like the things that I did You see, and I now, didn't do. But I guys, did. did you see the difference? I requested him to turn up for 15 minutes. He has turned up with completely prepared. That is what differentiates between champions. Go on. Okay. So means the first thing that anyone should do, means not even for NEET, for anything. Like, okay, so is everyone comfortable with Hindi or हिंदी चक दे. should I हिंदी continue with the हिंदी चक दे. तू Hindi? अंग्रेज बन गया वैसे मैंने देखा है, बट तू हिंदी चक दे. नहीं अंग्रेज नहीं है. हाँ तो ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है मीन्स वो प्लानिंग की, मीन्स प्लानिंग, और ये भी नहीं कि मतलब पर डे करनी है, पर वीक. मीन्स प्रॉपर प्लानिंग मीन्स पर मंथ का गोल डिसाइड होना चाहिए कि पर मंथ की आपका क्या करना है, क्या डिसाइडेड है. पर वीक का साथ में होना चाहिए और पर डे का भी उसी साथ में लेते चलो. मीन्स हमारे टाइम पे इस तरह था कि हमें ऑलमोस्ट वीक या फिर मंथ का हमें पता होता था कि कौन सा जीटी होना है, कौन सा टेस्ट होना है. सो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना के रखना चाहिए. और एक्चुअली जो एक चीज है जो काइंड ऑफ हेल्प करती है कि जब शेड्यूल बनाओ तो इस तरह का बनाओ कि मीन्स वो थोड़ा डिफिकल्ट सा हो शेड्यूल. तुम्हें पता हो कि तुम शायद वो ना कर पाओ, तो इस तरह से तुम धीरे धीरे करके अपना बार बढ़ाते जाओगे. मीन्स ऐसा रहेगा कि यार डिमोटिवेटेड सा लगेगा कि हाँ यार मैंने शेड्यूल में इतना काम लिखा था, ये कर नहीं पाया. बट एक्चुअली जो तुमने लिखा ही इतना ज्यादा है कि उसमें से अगर कम भी करते हो ना तो दैट विल बी इनफ. ठीक है. एंड नेक्स्ट चीज इज कंसिस्टेंसी. मीन्स देयर विल बी फेस्टिवल्स होंगे, ओकेजन होगी, तो मीन या यू कैन गिव योरसेल्फ अ रेस्ट, बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी थोड़ी इंपॉर्टेंट है. क्या होगा कि अगर एक दिन आ गया कि हाँ फेस्टिवल में जा रहा हूँ, आज नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी, उस दिन क्या होगा कि नेक्स्ट डे पे ना तुम इसी तरह से एक्सक्यूज ढूंढने लगोगे कि कोई और ओकेजन आ रहा है, इस दिन मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता. तो मतलब मैं ये चीज नहीं कर पाया, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि कुछ भी हो चाहे एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स जरूर देना. कहीं मैरिज है, कोई नहीं, एक आध निकालना यार मुश्किल नहीं होता, एक आध निकाल ही सकते हो. ठीक है, वो चीज बहुत जरूरी रहेगी. कुणाल, ये लोग तो अभी खुद की मैरिज के लिए तैयार है साले. Okay, just kidding, jokes apart. Yeah, continue Kunal, continue. ओके राइट. और एक चीज और, जैसे कि सबकी मोटिवेशन होती है कि हाँ यार मैंने डॉक्टर बनना है, या फिर मैंने पैसे कमाने हैं, या कुछ फेम चाहिए, कुछ भी. वो चीज होती है लॉन्ग टर्म की मोटिवेशन. ठीक है, वो मोटिवेशन डेली आपको उठ के मेहनत करके चेयर पे बैठ के पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएगी. दैट्स द ट्रू फैक्ट. ठीक है, उसके लिए तुम्हें लगेगी कोई स्मॉल मोटिवेशन जरूर होनी चाहिए. मतलब इंसेंटिव दो खुद को कि हाँ यार ये जीटी है, मैं ये करूंगा, अगर अच्छा परफॉर्म होता है तो ये काम मैं करूंगा. जो भी पसंद, सीरीज देखनी है, मूवी देखनी है, एंजॉय करना है, जो चाहे, जो भी पसंद. ठीक है, इस तरह कोई इंसेंटिव जरूर रखो, क्योंकि अगर ये इंसेंटिव नहीं हो ना तो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगी कभी भी काम के लिए. ठीक है. और क्या मीन्स अपना स्लीप शेड्यूल. मतलब मेरे को सोना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी कि उठने का प्रॉब्लम. तो मीन्स अगर आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बट लेट नाइट अगर कर सकते हो, लेट नाइट करो. अगर वो कंफर्टेबल लगता है कि सुबह नहीं उठा जाता तो लेट नाइट तक पढ़ लो. या और बाकी क्या अपना एंजाइटी वगैरह के लिए यार माइंड को हमेशा रिलैक्स रखो. ठीक है, कुछ इतना लॉस करने के लिए है नहीं. क्या हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, राइट. बट थिंग है अपना बेस्ट दो जब भी दे रहे हो. राइट. और हाँ मीन्स कि अब अगर किस तरह से सब्जेक्ट वाइज का अगर देखना है, तो सबको ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी पता ही होती है. बस जिसमें एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर फिजिक्स में क्या है, अपना न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट की है. मीन्स थ्योरी बंदा पढ़ लेगा, चाहे कितनी थ्योरी पढ़ ले यार, 10 बुकें पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स नहीं किए ना कुछ नहीं होगा. All the NEET aspirants listen to him carefully, even JEE aspirants. Yeah. सो एंड केमिस्ट्री में अपना 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, काफी डिफरेंट सेक्शन है, हर एक के लिए अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है. केमिस्ट्री जैसे है अपना सेक्शन, तो उसमें केमिस्ट्री में अपना इनऑर्गेनिक सेक्शन है. इनऑर्गेनिक की यही है कि रीड करो, रीड एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है देख, एक बार रीड करने से कुछ नहीं आएगा दिमाग में, एटलीस्ट 3 से 4 बार तो होना ही चाहिए ना रीड. बट दिक्कत क्या आती है, एक बार रीड करने के बाद ये करता है यार ये तो पढ़ लिया, अब क्यों पढ़ूं फिर से, मैं सेम चीज ही आएगी, बोर हो जाऊंगा. तो इसमें तुम एक तरह की टेक्निक यूज कर सकते हो कि मतलब फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू द पेजेस एंड रीड इट. नेक्स्ट टाइम पेंसिल लेके बैठो हाथ में, इंपॉर्टेंट चीजें लगे वो नोट डाउन करते जाओ. उसके नेक्स्ट टाइम हाइलाइटर ले लो,
हाईलाइट से हाईलाइट करो, उसके अगले टाइम पेंसिल से साइड में नोट्स बना लो या स्टिकी नोट्स, जो भी पसंद हो। तो इस तरह क्या रहेगा कि हाँ यार कुछ नया कर रहा हूँ मैं, ये सेम चीज रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तुम इतना बोर नहीं होगे। बाकी फिर अपना ऑर्गेनिक में मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी वो मत करना कि मतलब मैकेनिज्म जरूर अच्छे से समझना, क्योंकि ऑर्गेनिक को अगर इनऑर्गेनिक की तरह पढ़ने जाओगे ना तो लग जाएंगे कसम से। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी फिजिकल में वही क्या अपना फिजिक्स वाला फंडा है, थ्योरी पढ़ो बट न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और अपना क्या बायो में वही इनऑर्गेनिक रीडिंग, और वही जैसे बताया कि मतलब नेक्स्ट टाइम करो तो स्टडी में थोड़ा चेंज लाओ ताकि तुम बोर ना होते रहो, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो बायो और केमिस्ट्री में ना कई बार टर्म्स ऐसे होते हैं कि काफी मुश्किल टर्म्स हैं, याद नहीं रहेंगे, राइट। सो उसके लिए बेसिकली क्या मैं जो तरीका यूज करता था कि नेट पे जाओ, उन टर्म्स की एटिमोलॉजी सर्च करो कि मतलब वर्ड रूट का क्या मतलब है, वर्ड आ कहाँ से रहा है, तो उससे तुम्हें क्या रहेगा, वर्ड भी याद रहेगा, साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी याद हो जाती है, ठीक है। और मीन्स एक चीज थी जो मैंने मतलब लास्ट में कुछ 1-2 मंथ्स में की थी कि वो थी कि अपने न्यूमोनिक्स क्रिएट करना, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ना जनरली काफी चीजें होती हैं याद करने के लिए। इनफैक्ट केमिस्ट्री का मिनरल वाला पोर्शन, can you give me a minute, Kunal? Yeah. Guys, I am also introducing now Samya. So I don't know how she made it for today. Hello, sir. I am so good to see you. So let me brief about her. She scored again champion 2021. She scored 99.5 percentile in again NEET. Kunal and Samya, they were not friends, but they were in the same batch. They had the same struggle. So I remember NEET से एक दिन पहले हम लोग डिनर हम इवनिंग में कहीं गए थे, एक दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले हाँ, 2 दिन पहले संडे को नीट था, so on Friday evening I took them out, and Samya became a part of Genesis in class 9th, I think 9th 8th 9th yes the 9th and मुझे मैंने जितना इसके साथ दिमाग घिसाया है, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक किसी के साथ घिसाया है. She is in GMCH 32. So when I messaged her yesterday, दोपहर को मैंने मैसेज किया, she replied me back at I think 9 बजे, because that is the time she gets free, and she replied that sir हो सकता है कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँ because मेरा आज field day है. So when I say field day means doctors have to go. She is going to be an upcoming doctor. So Kunal and Samya, Kunal has explained some part of it. I'll go back to Kunal again. Samya, how is, I'll not ask you strategies, how is life in GMCS 32? You are studying in top 7 college of the country. How is life at GMCS 32, and is it worth putting an effort to go into India's best colleges? सर टोटली वर्थ इट. मतलब अब सब चिल है, पहले जो 2 साल की सारी पेइंग ऑफ. मतलब आई नो एमबीबीएस थोड़ी मुश्किल है, मतलब पढ़ना पड़ता है, पेपर से पहले पढ़ना पड़ता है 2 दिन, बट बाकी सब चिल है. तो टीचर्स वगैरह बस अब वही है कि अब थोड़ी याद आती है कि पहले जैसे स्पून फीडिंग होती थी, अब बिल्कुल नहीं है, तो अब सब खुद करना है. बट इट्स गुड. मतलब अगर अभी मैं यही किसी और कॉलेज में होती, लाइक आई टॉक टू माय अदर फ्रेंड्स जो कि दूसरे कॉलेजेस में है, तो काफी डिफरेंट है वहाँ का लाइफस्टाइल. यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छी है, यहाँ पे मेरी जो आसपास क्लासमेट्स हैं, लाइक वन ऑफ द बेस्ट टॉपर, 690 700 तक के बच्चे हैं यहाँ पर. एंड तो वो कॉम्पिटिशन फील होता है. पहले लगता था कि हाँ अब हम इंटेलिजेंट, अब तो कुछ भी नहीं है. मतलब ये नहीं हो सकता यार, ये नहीं हो सकता. तू तो बहुत इंटेलिजेंट थी यार. So सर मतलब यस कंटिन्यू. तो सर जब शुरुआत में जब आए थे तो प्रोफेसर्स बोलते थे कि तुमने देखो 2 साल खराब करके तुम यहाँ पर पहुंचे हो, इतनी भी बड़ी चीज नहीं है. बट जब देखते हैं तो काफी बड़ी चीज लगती है सर. True. That's awesome. I'm so good to see Champions 2021. Now I'm introducing Manik to you guys. Manik Agarwal, studying in IIT. Again, a jackpot kind of a human being. He joined Genesis again. Once again, he was a part of Genesis in class 9th, the most introvert and boring guy you can ever find, but one of the most simple human being. मुझे नहीं पता how he has transformed himself, evolved so much into completely last 8 to 10 months. I think IIT deserves the credit. Manik, again, I'm not going to ask you कैसे तैयारी करनी चाहिए. How has last 8-9 months have been? How it is to study in India's best college, and is it worth the effort?
which you put in last 4 years with Genesis? Yes, sir. It is definitely worth it because if you're studying in India's best college ना, तो आपको फील आती है लाइक आपके आसपास के लोग ही आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है थोड़ा लाइफ में. यू कैन टेक अ चिल, यू कैन रेस्ट एंड ऑल यू कैन थिंक. आपको पता है, आप ही कह रहे थे. तो वही सर, बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज में. तो क्या आपको लगता है आपने बहुत 2 साल मेहनत करी है तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, अपने आप को ब्रेक दे सकते हो, एंजॉय कर सकते हो लाइफ जो आपने उस 2 साल में नहीं करी. ट्रिप्स पे जाओ, बहुत कुछ होता है सर कॉलेज में लाइफ में. या तो बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइक कल्चरल फेस्ट, बहुत सारे फेस्ट होते हैं कॉलेज में सर. तो बहुत मजा आता है कॉलेज में. अगर एक बार आप पूरी मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में जाते हो ना, तो फिर आपको वो मजा और आता है. जब आपके साथ में भी लोग होते हैं, उनको भी वही सब, यही जो आपके साथ वाले लोग होते हैं वो भी ये सारी मेहनत करके आते हैं, तो वो भी सारे साथ में मजे करते हैं, तो बहुत मजा आता है. तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ आप किसी कॉलेज में जाते हो ये कहीं और से आए, तो कि वो भी सारे सेम पाथ से आते हैं, सेम उस सब स्ट्रगल से आते हैं जो हम करके आते हैं अपने टाइम में. तो मजा आता है, बहुत मजा आता है तू मजे करता है? सर, पहले से तो काफी. So good to hear. Guys, you can start sending your doubts. Okay, let me answer. There's a question which any one of you can answer, guys. How to be free of the fear कि इतना पड़ा है, modules ये हैं, ये भी करेंगे, and how to move from, I think I'll brief the question, how to move from thinking zone to actually doing zone. Any one of you can answer it. Any one of the champion can answer it. Moving from thinking zone कि पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी क्वेश्चन है, डीसी पांडे भी करनी है, जेनेसिस के मॉड्यूल्स भी करने हैं, ऑल दैट स्टफ, बट एक्चुअली करना है. हाउ डू यू मूव फ्रॉम दैट थिंकिंग जोन टू द एक्शन जोन? दिस इज द क्वेश्चन. सर जैसे 11th में मेरे साथ, 11th 12th में मेरे साथ हुआ था, जब मैं थोड़ा डाउट करने लगी थी. आपको तो पता ही है कि इनको बता देना, इनको बता देना, इनको नहीं पता. तो मैं काफी डाउट कर रही थी कि अप टू डेट चल रहा है मेरा, अप टू मार्क चल रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है, और मतलब सब मॉड्यूल सब कुछ हो रहा है. बट जैसे जैसे फिर 12th आई और जब रिवीजन हुई, जब नीट पास आने लगा, जब ज्यादा पेपर्स देखने लगे, तब था कि जो बेसिक जो एनसीईआरटी है वही सब कुछ है. बायोलॉजी तो स्पेशली जितने भी बड़े बड़े नोट्स थे सब थे, वो नीट से पहले कुछ नहीं देखे. तो सर ये सिर्फ मतलब इट्स जस्ट इन द माइंड. अगर हम सही माइंडसेट से पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना, तो इट डजंट मैटर कि हम कितने मॉड्यूल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. प्रैक्टिस इज मस्ट, ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज मस्ट. जितने ज्यादा क्वेश्चंस है उतना बेटर. बट अगर हम यही सोच के चलेंगे कि क्या छूट रहा है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट एवरी टाइम कुछ ना कुछ तो रहता ही है. We can't do 100% of it. कुछ ना कुछ कभी भी मैंने हमेशा आप सबको भी यही बोलता हूँ कि कभी भी जो लोग क्रैक करते हैं, आपको उनके सामने रखा हुआ है, वो भी अगर आप उनसे अभी पूछ लो कि आपको सारा मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल, रोटेशन, क्या ये सारे चैप्टर्स आते हैं, आंसर वुड बी अ बिग नो. ट्रस्ट मी, यू कैन आस्क देम. बट स्टिल दे आर स्टडिंग. तो देयर वुड बी, सक्सेस इज ऑलवेज शैबी. यू कांट बी परफेक्ट, यू कांट बी, बट इट्स दैट कि जो टाइम निकल चुका है उस पर यू कैन नॉट फोकस. You can only focus upon what is left. Yeah, there's another question. Backlog को कैसे cover करना है? बेटा backlog होने नहीं देना. In case you have joined late, then probably you can contact me personally. I'll help you build a timetable to do that. What there's another interesting question. What all did they use as a motivation? Because achieving this without motivation is not possible. Who wants to answer this? Anyone of you can answer this? Motivation क्या था? Like कुणाल ने बोला कि हाँ जी मानिक, yes. बेसिकली सर जेई तो लाइक 11 में ज्वाइन किया था, तो जेई मतलब करना था. मोटिवेशन पहले तो ये थी कि सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स करना है. मोटिवेशन थी कि क्वेश्चन करना है. तो मतलब बहुत बड़ा गोल सीधा ही नहीं रखा कि जेई क्रैक करना है. जैसे कोई टेस्ट आ रहा है, जीटी आ रहा है, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड देना है कि हाँ ये मिलेगा ये टाइम पे. मतलब आप अगर बड़ी पिक्चर में स्मॉल स्मॉल गोल्स को अपने आप को जब आप वो अचीव करते हो, अपने आप को रिवॉर्ड देते हो ना कि हाँ अगर आज यहाँ चलते हैं, अगर हमने ये क्रैक कर लिया, यहाँ घूमने चलते हैं, ये खाते पीते हैं. मेरे तो सर फूड वाज मस्ट कि मैं कुछ अच्छा करूँ तो पैटी खाऊंगा आज, एक जीटी अच्छा करूंगा तो एक पैटी एक्स्ट्रा खाऊंगा. यस सर. बस जब आप कुछ अचीव करते हो, कोई टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दो. तो सिंपली ये मत सोचो कि हाँ मैंने वो, अब 2 साल की बात किसी ने नहीं देती, 1 साल के बाद पता नहीं क्या होगा. शायद आप वो पिक्चर में ही नहीं होगे कि आपने मतलब सारे दिन नॉन मेडिकल की पढ़ाई करी, पर शायद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ही नहीं चाहोगे. तो आप पहले इनिशियली छोटे छोटे के
मंथ में सोचो कि हाँ ये टेस्ट आ रहा है, इसमें अपने को रिवॉर्ड करो, यही मेरे सर मोटिवेशन होती है कि हाँ अगर एक तो हेल्दी कंपटीशन से बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सर आपके बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, वो अच्छा स्कोर करते हैं, आपका थोड़ा सा स्कोर लो हुआ तो आपको वैसे ही थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ अब मुझे अगली बार इससे अच्छा करना है। पहले सर ऐसा ही होता था, और बस अपने आपको रिवॉर्ड्स दो सर, और तो मेरे हिसाब से यही करता था मैं। Awesome, that's awesome. There's another question. I'll now there are a lot of questions, but I'm asking all. Sorry, I'm sharing all the relevant one because we're running short of time. This is okay. We have to live in the present. If kuch chhoot raha hai, NCRT for maths is not enough, guys. If your target is even JEE main, NCRT is not enough. JEE का paper बहुत tough आता है main का भी. Okay, closing statement, guys. We'll close it in next probably 1 minute or so. So we'll start with Divyansh. Closing statement, one line. सर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हमें, अगर आप एंड में सब कुछ करोगे तो कभी नहीं होगा। Consistency is रहना the key. पड़ेगा। Great. So Yes, you have sir. all of you, even if you're in +2, you have a lot of time, but you got to step up your game now. Mananpreet. अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड करो कि लाइक कि हाँ होगा, मतलब अगर खुद को बोलोगे तभी होता है, कि लाइट एटीट्यूड से रहोगे फिर नहीं होता। Obviously, the first thing to crack any exam or doing good in life is first you have to believe you do it. You can do it. If you're not believing it, you will never be able to do it. Manya 2. Same, so consistency and keep repeating the stuff and confidence नहीं आएगा तो confidence मेरे को तो हमेशा question से ही था। If I practice questions, I do well. Accuracy सही गई है तो confidence automatically आ जाता है। Thank you. Manya 1. माइंडसेट क्लियर रखो बस अपना, कि हमें कोई रिग्रेट नहीं चाहिए फ्यूचर में, अपना बेस्ट दो एंड बस लगे रहो। लगे रहो। कुणाल. मेरा थोड़ा उल्टा है, सेल्फ डाउट एक्चुअली होना चाहिए। Okay, you can elaborate. You can elaborate. तुम ऊपर क्या, अगर सेल्फ डाउट नहीं है ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार मेरे को सब कुछ आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्यों करना है ये सब। जब तक सेल्फ डाउट रहेगा कि हाँ भाई वो बंदा ये कर रहा है, उसने इतना कर लिया, मैं कर नहीं पाऊंगा शायद, तो मेरे को मेहनत करके लेना पड़ेगा, वो जो गैप है वो मेहनत करके कंट्रीब्यूट करना है, तभी कर पाओगे। आई थिंक यहाँ पे मननप्रीत का पॉइंट कुणाल ये था कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग विद द क्लास 11th क्लास किड्स इज बिकॉज इन लोगों का 9th 10th ऑनलाइन निकला है। सो 11th में द फाउंडेशन इज वेरी वीक, सो कई बार बिना एफर्ट डाले ही बच्चों ने गिव अप करना शुरू कर दिया, हमसे नहीं हो पाएगा। सो वहां पे एक फर्स्ट सेंस ऑफ बिलीफ जरूरी है कि हम अगर हम करेंगे, एफर्ट डालेंगे तो कर पाएंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। मानिक, क्लोजिंग लाइन। सेल्फ बिलीव और अपने आप को मतलब फील करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अचीव कर चुका, ये भी फील करो कि हाँ जब मैंने अचीव कर लिया तो फिर क्या होगा। That's a very important intake because if I have always said, पुराने बच्चों भी जानते होंगे, if your excitement of winning is greater than the fear of failure, you would always win in life. If the excitement of winning is greater than the fear of failure, you would always win in life. There's one more question. What are the views on can some student involved in physical activity, gym? ये मतलब अभी आदित्य, but I'll answer that for you personally. Samya, closing line बेटा, closing statement. सर हर एक स्टेप को अच्छे से एनालाइज करो अपने और एंजॉय द प्रोसेस, इट्स गोना बी फन। Enjoy the process, it's going to be fun. And I think, guys, opening to all of you, if someone wants to ask a question not via chat but directly, you can raise your hand, I'll give you an option, because अब वही बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका जेन्युइन कॉन्फिडेंट, मतलब जिसको क्वेश्चन जेन्युइन होगा वही हाथ खड़ा करेगा। रेज योर हैंड्स। Great, guys. For all of you, yeah, we have one question. Shaurya Sharma, give me a minute, Shaurya. Yes, Shaurya, you can unmute yourself and ask a question, beta. Good evening, sir. Good evening, Shaurya. Congratulations to all of you. Congratulations, तो taken, beta. Yeah, question. तो सर मेरा आजकल ये चल रहा है कि सर मैं पढ़ तो लेता हूँ सर, जैसे मैं केमिस्ट्री करने बैठ गया तो उसे 3 घंटे निकल के पता नहीं लगता सर, फिर ना एकदम से एक डाउट आता बीच में, अभी फिजिक्स भी बची है, मैथ्स भी बचा है, तो इसको बंद कर दूं या करूं। सर मैं बंद कर देता हूँ, मैथ्स करने लगता हूँ
तो फिर मन आता है कि फिजिक्स बीच में केमिस्ट्री बीच में छोड़ दी, उसको पूरा कर लेता हूँ, फिर मैथ्स करता हूँ। तो सर उसमें ही सारा टाइम निकल जाता है, तो फिर मैं सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ नहीं पाता हूँ। So sorry, let me answer that for you, because this came from the answer which Kunal gave. Strategy and planning is very important. What mistake most of you are making is that you're studying without planning. शीशे के सामने जैसे हम खड़े होकर शक्ल देखते हैं, हम लोग अपनी सो कॉल्ड बुक्स के अलमीरा के सामने खड़े होकर देखते हैं आज कौन सी किताब पढ़नी है, जो उठा ली उसको निकाल के 5 पेज पढ़ने के बाद हमारा इंटरेस्ट चेंज हो जाता है. That's not how we function. For functioning productively, you should have at least a week's plan in front of you. इस week इस दिन ये चैप्टर्स करने हैं. वो क्यों करने हैं? Because वो GT आ रहा है या स्कूल का एग्जाम, whatever is your target, board है, whatever is your target. But you got to pre-plan. You can't get up in the morning, decide the way you do shit, you do studies. ऐसा नहीं होगा. Planning strategy is important. At least a week plan, since you're I think you're in +1 right now. Am I right? So planning is Yes, sir. planning is very important. Okay, guys, any other doubt? I think, guys, now Archit, yes, Archit Chaudhary, you can ask. Sorry, lowered on your hand. Like, हम ट्राई करते हैं कि जैसे पर सब्जेक्ट को डेली आज इतना टाइम देंगे कि 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स, कुछ ऐसे. बट सर जब स्टार्ट करते हैं तो होमवर्क वगैरह में या ऐसे इतना टाइम चल जाता है कि वो जो फिक्स टाइम है ना कि पर सब्जेक्ट फिक्स इतना देना है, वो नहीं दिया जाता. मतलब मैथ्स को ज्यादा दिया जाता है या फिजिक्स को, तो एक सब्जेक्ट कभी कभार मतलब पीछे छूट जाता है. So, उस चीज को मतलब So I think anyone can answer that. Archit is an Excel batch, guys, so you can answer him. ओके, मैं आंसर करता हूँ. एक्चुअली जो सब्जेक्ट छूट जाता है वो इसलिए नहीं छूटता कि वो कर रहे थे काम या नहीं. वो सब्जेक्ट जनरली वही छूटता है जिसमें इंटरेस्ट कम होता है. जनरली इनका केमिस्ट्री छूटता सालों का सबसे ज्यादा. केमिस्ट्री पढ़ के राजी नहीं है, फिजिक्स मैथ्स पढ़ते रहते हैं साले सारा दिन. सो ठीक है, कंटिन्यू. और एक्चुअली जो मैं स्ट्रेटेजी एक्चुअली यूज करता था वो क्या थी कि मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं करता था. मैं अगर एक दिन में कोई सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो या तो 1 या 2 सब्जेक्ट मैक्स एक दिन में, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली. क्या होता है कि एक बार जब कंटिन्यू बन रहा है ना, तो यार आप बायो की तरह कुछ सोच रहे हो तो उसके लिए एक अलग थिंकिंग प्रोसेस चाहिए. आप सडनली फिजिक्स पे आओगे तो वो थिंकिंग प्रोसेस चेंज होने में टाइम लगता है. तो इसलिए बेटर है कि फिजिक्स अगले दिन करो. वो उस तरह से कंटिन्यू एक तरह का बना रहता है. Okay, that's an interesting tip. You can, guys, this is not compulsory. These are tips. Their journey, Yeah. everyone is different. If you can probably experiment for a day or 2 or 5 days, and then you can and you can this. I think as we're running short of time, ek bar sab unmute karke, can we thank all of them? Guys, can we together unmute ourselves and thank on the count of 3, 1. Ek bar unmute kar lo salo apne aap ko. We should have a loud noise. 1, 2, 3. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Guys, thank you so much for joining. I cannot share their numbers with you because they have, especially the ones who passed out last year, they are busy person. 2-4 साल बाद शायद मुझे भी नहीं पहचानेंगे. Jokes apart. So the bottom line is, let me conclude it. The bottom line is that it's worth putting the effort. It's not about the college you get into, that's still at a later stage. You're still young, you either in +2 or +1. If you're in +1, you still have a lot of time. In +2, you still have year or so, but it's worth putting the effort, because when you put an effort, what you would see is in all the kids, what you see is you would see kids, this 8, 10, jitno bhi aaj join kar paye, they have very few regrets. Living with regrets is one of the worst thing you can do to yourself. And once you give your best, even if thoda 2-4 percentile upar niche ho jaye, from top college to second top college, you still manage the third top college. Itna chalta hai. But once you know that you were capable of getting into this college and you end up here or even lower than this, us regret ke saath agle 4-5 saal nikalna bahut mushkil hai. You know that I have been through that, so it's not easy. So jitna main is journey ko samajh paya, I think there would be days when you will not be able to put an effort. There would be days when it is okay to take a break, but there has to be consistency. The madness will only come when there is consistency. Thank you so much, all of you, for joining it. I think it would leave a lot of kids with a lot of thought process. I hope you have loved the session and you've thoroughly enjoyed.
जिन्होंने भी ये सेशन सुना है 11th-12th क्लास किड्स, डोंट एकदम से ब्रेक मत लेना. 10-15 मिनट once we end the session, take notes, go through what you have written, लिखो और notes लिख लो, go through it, put them on a wall. I'll send a Google form to you in your top 3 key learnings from this session, and then let's step up the game from tomorrow. And once again, Divyansh, Mananpreet, Manya, Kunal, Manik, Samya, thank you so much for joining, guys, especially Kunal, Manik, Samya. You guys are busy. And there is a request कि क्या ये बच्चे हमारा entrance exam दे सकते हैं. So thank you so much, guys. Thank you so much for joining. Have a good Saturday evening. Loads of love. 3 cheers to all of you. Bye bye. God bless you. Thank you and Thank you, good sir. luck. Thank you, sir. Good luck. Thank you. Thank you.